rather its jurisdiction is summary in nature. پھر وہ آ گیا کیس کی کوٹیشن بہادر والی, and then para 21. The outcome of the aforesaid discussion is that the impugned action of ECP denying election symbol to the petitioner has the effect of depriving the petitioners and its members to freely participate in the affairs and governance of Pakistan through political activities as guaranteed through Article 17(2) of the Constitution. Indeed, the Constitution 73 ensured that every citizen in Pakistan has the right to form or be a member of a political party subject to any reasonable restriction. اس سے تو کوئی تو رائے نہیں ہے. پھر وہ quotations آ گئی. We've already read the judgments, refer to them at least. And then the conclusion at page 23, I would like to read. Last 5 lines. The government of the political party so formed must implement the program of the political party which the electorate has mandated it to carry into effect. And now this. Will you agree with this? Suppose you give a certain thing, manifesto. So you, the government of the political party so far must implement the program of the political party. کوئی manifesto کی بات نہیں تو پھر یہ کیا ڈیکلیریٹری ڈگری وہ ججمنٹ دے رہے کہ آپ نے whatever کہہ دیا اپنے مینیفیسٹو میں آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے. یہ تو میرے خیال میں مناسب بات نہیں ہے. ہونا چاہیے سر, بیکاز مینیفیسٹوز ہماری پولیٹیکل ہونا چاہیے. اٹس لائک اے وش نا, کورٹ کین ناٹ ڈائریکٹ. سپوز کل آپ کہیں گے جی 16 سال کے بچوں کو یا ان کو ووٹ کا حق دینا چاہیے, فار انسٹنس آپ کے مینیفیسٹو میں لکھ دیں, کورٹ کانٹ ڈائریکٹ یو, پارلیمنٹ کین چینج لاز اف وانٹس ٹو. بالکل صحیح. Any unlawful order which results in frustrating this activity by removing it from the office before completion of its normal tenure would therefore constitute an infringement of this fundamental right. اس کے بعد سے نیکسٹ پیج پہ انہوں نے وہ کیسز ہم کوٹ کر چکے ہیں آلریڈی, ریلیشن شپ بٹوین سمبل اینڈ اے پولیٹیکل پارٹی, اینڈ دین دا سمپل کنکلوژن دیٹ the jurisdiction is not there. So I would support this judgment. And آخری بات جو میں کروں گا سر, because I have to conclude in 10 minutes. The only thing it may except if I can speak on your behalf, except calling a provision of law absurd. As a parliamentarian, you would not want that to. That can be changed. بالکل ٹھیک ہے. چلیں جی. اچھا سر, before I end, ایک دو just the concept کہ ایک جس نے کنڈکٹ کیا الیکشن اس نے درست کنڈکٹ نہیں کیا اور اس کی وجہ سے سمبل لے لیا گیا. جسٹ دا کانسیپٹ, ایک کیس تھا کافی پرانا, PLD 68 سپریم کورٹ. اس میں ہوا یہ تھا کہ بار کاؤنسلز کے الیکشن کرانے ہوتے ہیں ایڈوکیٹ جنرل نے, وہ چلے گئے رن آف کچھ کرنے, آربیٹریشن رن آف کچھ کی. سو ہی واز گوئنگ ٹو بی اوے. تو کوئی اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل یا ایڈیشنل تھے, انہوں نے الیکشن کرا دیے آف دا بار کاؤنسل. تو بحث ہو گئی کہ کچھ جھگڑا ہو گیا بٹوین دا ڈفرنٹ کینڈیڈیٹس آن دا الیکشن. So one of the grounds taken was کہ یہ الیکشن جو جس نے کرایا is not the advocate general, he is somebody else. تو کورٹ نے کہا کہ show us the prejudice that was caused because of him not being a advocate general. تو اگر وہ prejudice نہیں ہے تو there is no connection or nexus between us declaring that election as void or otherwise. Wouldn't those who wanted to contest, who have not been able to contest, aren't they prejudiced? کسی نے یہ ریز نہیں کیا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ الیکشن کمیشن کی اپوائنٹمنٹ غلط ہونے کی وجہ سے وی آر پریجوڈسڈ. Nobody raised that. نہیں, وہ ان کا تو اور بھی بنیادی, وہ تو کہتے ہیں ہمیں نامینیشن پیپر, ہمیں آپ نے نامینیشن پیپر تک نہیں دیا تو ہم الیکشن لڑیں کیسے. جی وہ یہ کہتے ہیں, ان کا تو اور بھی بنیادی. لیکن میرا بھی میں جو پوائنٹ بنا رہا تھا وہ یہ تھا کہ nobody said کہ جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے وہ غلط تھی اور جو کنڈکٹ کیا وہ غلط تھا. None of the people have said that. They've only said what your lordship is saying. شاید ان کو پتا بھی نہ ہو نا کہ آپ نے اندر کرا کیا, کیونکہ جب وہ تو صرف کمپلین کر رہے ہیں کہ جی مجھے الیکشن میں حصہ نہیں لینے دے رہا. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ کاغذ تو بعد میں آئے نا, کہ یہ کاغذ ہے وہ کاغذ, ان کو تو یہ نہیں پتا ہوں گی چیزیں, شاید وہ آبجیکشنز لے لیتے. That point is conceded. But nonetheless the point being کہ کوئی prejudice on the face of it نہیں ہوا. اور یہ ججمنٹس ہیں, کچھ ججمنٹس میں کوٹ کرنا چاہوں گا. یہ لارڈشپ میں say
different things. इसी point पे कि there's a concept of de facto, something happening de facto. कि अपॉइंटमेंट्स गलत भी हों तो जो ऑर्डर्स पास हो गए हों या एक्शंस हो गए हों वो नलिफाई नहीं होते. ये तो आपका कोई सरकारी ओहदा तो नहीं है ना जी. हाँ, तो वो प्रिंसिपल यहाँ कैसे वो इस तरह अप्लाई करूँगी इवन सरकारी ओहदे में, इवन सरकारी सिचुएशन में, इवन जहाँ जजेस अपॉइंट गलत हो जाए और उनके जजमेंट्स को क्वेश्चन किया जाए तो ये कहा जाता है मलिक असद केस में तो प्रोटेक्टेड है. जी जी अली वो वाला जो ज्यादा जजेस के वो जी जी फरजंद अली केस, असद अली केस, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन केस, वो तो सेटल्ड प्रिंसिपल है. तो वो अगर प्रिंसिपल आप देखें कि अगर आप पे कैसे लागू होगा ये प्रिंसिपल, वो इस तरह होगा कि अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्डर को ये कह सकते हैं कि वो उसकी अपॉइंटमेंट गलत है तो उसके ऑफिशियल ऑर्डर्स और उसकी जो डिसीजंस हैं ठीक हैं, तो फिर एक प्राइवेट पार्टी में अगर एक बंदे को आप कह भी दें कि उसने गलत अपॉइंटमेंट हुआ है इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए, तो इलेक्शन को किस तरह अवॉइड कह सकते हैं. टू दैट एक्सटेंट इज माय आर्गुमेंट ऑन दिस. तो आप दोबारा कर ले इलेक्शन, मसला क्या है? सर सिंबल निकल गया ना. आई हैव नो इशू. अच्छा ओके आई सी. आई हैव नो इशू. ठीक चलो अगर मुझे मिलता टाइम तो आई वुड डन इट, लेकिन वो सिंबल मींस आई एम बेसिकली खत्म आई एम खत्म जी. I hope you're not खत्म. अच्छा वो आए वो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस बुलाए उनको और साहब किधर हैं? A very serious complaint has been made before us. This is completely intolerable. Please attend to this complaint immediately. If heads need to roll, do so. Mr. गौर अली, घर पे कौन था आपका? मेरी मिसेस थी, मेरा बेटा था, और वो आप फौरन उनके घर पे जाइए खुद. लॉर्डशिप क्या हुआ यहाँ? If you still have a complaint, you submit it to us in writing. Sure, Your Honor. ठीक है. So this is very serious. Do you know what has happened or you don't know what has happened? Lordship, it's जो early. You know what has happened or not? Lordship, we have. It's a raid on. Too early to comment on. We understand certain things happen, and the police has gone to that place. लेकिन जो detail ऐसे आप ये बताइए. लॉर्डशिप जो अभी तक इतना और they had the information of proclaim of कौन है proclaimed offender? ये डिटेल एग्जैक्टली नाम में नहीं है, लेकिन गए हैं, पता चला है कि ये घर है, so they will return. वो कौन है proclaimed offender? वो होगा जो ASI या जिस लेवल का ऑफिसर गया है ही आप ज़ाती तौर पे मालूमात कीजिए और फिर हमें रिपोर्ट दीजिए और एसोसिएट और फॉर हु वाज एट द होम. तो आप तो यहाँ थे, आपको तो नहीं पता क्या हुआ. ठीक है. इट्स अ वेरी सीरियस मैटर. देखें full protection. ठीक है. Since you are not aware of it, but heads may roll. So आप जरा सा take personal. गौर साहब, would you like to go with or you are on? रेड हुई है जी. आप ऐसा करें कि आप इनको ले जाइए गौर साहब को अपने साथ. ठीक है. इन द सेंस कि उनसे पूछ, इनको तो नहीं पता, आप इन्हीं के घर जाइए. जी सर. आप खुद जाइए, गौर साहब को भी ले जाइए, मालूमात कीजिए. And if Gaur Sahib is not satisfied, then Khan Sahib, you can convey the thing or he can directly. So it would be better if आप कर लें. ठीक है. तो ठीक. Lordship. Anything else, Gaur Sahib? That should be enough for now, Your Honor. तो आप ठीक है, please go along with the Inspector General. आप जाइए. I think this is the first priority order of business. Lordship. Actually, I didn't want your arguments to, because I mean, I don't know what's happening.
So I just wanted to tell the AG to send for the Inspector General of Police. I'm telling the AG he won't know anything. Ji. Thank you, sir. I've concluded, ma'am. Mr. Makhdoom Ali Khan, where is the जो बाकी 13 लोग हैं उनके लिए कोई वकील हैं वो you only represent one नंबर के लिए person हैं. अच्छा सॉरी आप want to add something जी. I'm extremely grateful that your lordship has taken cognizance of what has taken notice of what has happened during the course of the this incident actually provides answers to two questions that have arisen here during the course of hearing. One was थोड़ा सा इंतजार करें, let's see what happens. नहीं वो अगर गौर साहब is not satisfied, we will take further action. Don't worry. केस को कुछ We have not taken any मतलब let's चलिए अब केस पे बात जनरल करें. परसेप्शन की बात परसेप्शन ये है कि यहाँ पर किसी को कोई काम नहीं करने दिया था. The two places इस्लामाबाद साहब हम भी पाकिस्तान में रहते हैं. नहीं सर बात तो मेरी मुकम्मल कर ले तो उसका आप नोटिस ले रहे हैं. मेरा फर्ज है मैं जनाब तक पहुंचाऊं. Why we held elections in Peshawar? The administration in Islamabad and harass our workers. खान साहब आपकी बात करिए हम मान लेते हैं. ये सरकार को खत क्यों लिख रहे हैं इलेक्शन तो पता ही नहीं. तो एक तरफ तो आप बता भी रहे हैं ना तो वो जरा कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है उस बात में. सवाल ना वो तो मीटिंग ही नहीं करने देते और हम चुपके से जाकर अपनी मीटिंग कर ली. तो फिर आप खत तो नहीं लिखते उनको क्या मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करो. तो उन्होंने जवाब में लिख दिया भाई कहाँ कर रहे हो आप करते नहीं. Notice to them. Secondly, every remedy in the world, but we can attend to the case. जी. Why did we choose the Peshawar High Court? दूसरा ये सवाल. जी. Ladies have been picked up during that day. इस केस के लिए आपकी कोई वर्कर की जरूरत नहीं है. केस एक वकील की जरूरत है ना. अली जफर साहब तो खड़े भी हुए कल कोर्ट में और उन्होंने भी की तो या ना हो रहे मगर वकील या तो आप कहें जी किसी को आने की जरूरत नहीं है. जैसे खड़े हमारे सामने ये सिर्फ आपको आने की जरूरत है. मैं परसेप्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ. Why we prefer because the most independent of the high courts we feel is still the Peshawar High Court because their orders are being carried out. The orders of Islamabad High Court and Lahore High Court have not been carried out. इधर से बेल मिलती है वो बाहर निकलते हैं साथ ही उनका डिटेंशन ऑर्डर में फिर अंदर कर दिया जाता. पेशावर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में. मगर ये देखिए बुनियादी आईनी सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे. एक लिस्ट आपने 5 मेंबर बेंच की बेंच बन गई. 5 मेंबर इज अ वेरी बिग बेंच फॉर अ हाई कोर्ट. लाहौर व्हिच यूजुअली इज 1 मेंबर सिंगल मेंबर बेंच. तो वही केस आप वापस ले लेते. फिर दूसरी बात है वो केस पेंडिंग उधर है फिर आप लाहौर चले गए इस्लाम पेशावर चले गए. इस बात समझ नहीं आ रही है ये बात. सर वो तो एक किसी एक इंडिविजुअल ने किया पार्टी ने. नहीं वो वाला केस भी छोड़ दीजिए. वो भी मान लेते हैं मगर वो जो WP जो वो क्या नंबर है उसका 81171 इसके लिए बनी थी ना या 2023 इसके लिए बनी थी 5 मेंबर बेंच. वो वाला दूसरा फैसला आप जवाद हसन साहब की बात कर रहे हैं वो सिंगल मेंबर था और इंटर कोर्ट अपील में वो अपील हो गया. हम उसको भी छोड़ देते हैं. हम इस वाले केस की बात कर रहे हैं 5 मेंबर बेंच जजमेंट जिसमें इलेक्शन ही का इशू था लेकिन उसको प्रेस नहीं किया गया है. नहीं अब आज भी जिंदा है केस पेंडिंग पड़ा है. कल उसमें अली जफर साहब ने खुद कहा कि मैं अपीयर हुआ था मगर बेंच डिड नॉट से दैट आई मूव्ड एन एप्लीकेशन विथड्रॉइंग द पिटीशन और एनीथिंग. बट एनीवेज इवन इफ ही डज सो नाउ the relevant date will be at the date of filing of
the petition in the high court, Peshawar High Court. Otherwise देखिए हमें भी पता था, भी वकालत करते थे, कभी सोचते थे कि कभी इधर ज्यादा केस चल जाएगा या whatever, या जजेस का अप्रोच होता था, ये हम सब गुजरे इस स्टेज से, तो हम कोशिश करते थे कि भी jurisdiction खींच के लिए भी जाते थे कहीं और भी, लेकिन we've all played this game. पर एक दफा इंतखाब कर लिया आपने jurisdiction का, कभी कभी हमने इस्लामाबाद में कर दिया, इम्पोर्ट हो रही है कराची से, नहीं बिकॉज ये FBR is based in इस्लामाबाद, हमने वो यूं बना ली jurisdiction. तो अगर आपने जब इंतखाब कर लिया फिर जाना मुझे नहीं समझ आता है, ये बात है. एक्सपीरियंसेस हैं हमारे, मैं इसको ज्यादा डिटेल में टाइम नहीं लेना चाहता. I just wanted to inform you. Now, sir, I'm coming to the propositions, few propositions, in addition to what has been very ably, comprehensively argued by Mr. Ali Zafar. I'm just adding a few propositions to that. And most courteously, if we may add. Your Lordship knows me better than that. And you are also very kind always. I try my best not to be ever discourteous. First proposition, first and foremost submission is that Election Commission of Pakistan, ECP being a constitutional and statutory body performing regulatory and quasi-judicial functions. That ECP being a constitutional/statutory body performing regulatory and quasi-judicial functions cannot legally be an aggrieved person. And therefore has no locus standi to file the present petition before this honorable court. Therefore, the petition of ECP is not maintainable and liable to be dismissed on this preliminary ground. I'm relying on two recent judgments of the Supreme Court. एक चीज बताएं, when you use the word aggrieved person, does Article 185 require that? If a judgment is wrong, I may not be aggrieved by it. Can I not still challenge it under? They've come under 185. They have not come under Article 199, which of course starts with the word any aggrieved person except habeas corpus. So let's see, 185, does the word aggrieved mention or no? It's not mentioned, no doubt about it. But generally, suppose someone challenges a judgment of the High Court, Yes. and he may not be aggrieved, but he may say this judgment is wrong. May not So be. if he was a party in the lower court, will we say, oh, you're not aggrieved by it, but would it really matter? We agree with you, but it's not a requirement of the Constitution that they have to be aggrieved, or is it? It may not be in Article 185, but may submit that generally the principle that is applied for any kind of writ jurisdiction and separate jurisdiction is under Article 199. So though the appeals or the petitions are filed under Article 185 clause 3, but that does not mean that the principle applicable to Article 199, because it is initiated through Article 199. But there they were the respondent, not the petitioner. Yes. So the requirement of aggrieved would be on the petitioner, not on the respondent. No doubt. But sir, the result is that it is continuation of that. Why was the petitioner here? They are the petitioners. But the question ये is, बताइए, सपोज ऐसे मफरूजे के तौर पे जी जी, कोई और केस में हाई कोर्ट कह देता है आई हियर बाय अबॉलिश द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जजमेंट आ गया, so another party aggrieved can come home. ECB can't come. अजीब सी बात नहीं होगी, या वो किसी मेंबर को रिमूव कर दें कि आई डोंट लाइक दिस मेंबर्स फेस, आई रिमूव हिम. I mean, I'm giving you absurd examples, so point can be appreciated. So
ECP कांड कम जी मेरे मेंबर को हटा दिया, अनलेस टोरंटो रेट हो तो अलग बात है, ठीक है, या हम ये सारे मेंबर्स बदल दो, नए वाले अपॉइंट कर दो। जावेद हाशमी केस में भी ECP था पिटिशनर इस कोर्ट में, जावेद हाशमी का जो केस है ना कल साइट हुआ है, ये जरा मुझे ज्यादा इसमें, but I'm relying on judgments subsequent to the Javed Hashmi's case. Let me show these judgments. जावेद हाशमी का केस तो 5 These are very recent judgments. One is 2023 judgment. जो आपने हमें 2 दे चुके हैं वो रिपीट ना कीजिए, वो मैंने अभी भी नोट आपको बता देता हूँ जी, वो आप, एक ऑम्बड्समैन का था और एक वो था कमीशन का, वो जी सर, वो वाले हमने नोट कर लिए, उसके अलावा कोई बताना कर चाहिए ली। वो तो आपने पहले दिन बता दिया था। एक जजमेंट इसके अलावा दूसरी PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 5-1. There is also now one more judgment. PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट, That PLD 2020 Supreme Court 586. ये वही वाला है, कल वाला है। वही 2 जज। हाँ वो तो मैंने नोट किए हुए हैं। एक केस में जो था वो कंपटीशन कमीशन था, स्टैट्यूटरी बॉडी, दूसरे केस में ओम्बड्समैन था। इलेक्शन कमीशन का कोई डायरेक्ट केस है आपके पास, इसमें इलेक्शन कमीशन का पार्टी और उसमें ये होल्ड हुआ हो, क्या आपकी तरफ से आगे आपके अगली पार्टी हो ही नहीं सकती? ड्रॉ पैरेलल, वो मैं आपको अर्ज किए जाता हूँ कि इसमें क्या वजूहात है, व्हाट इज अ पैरेलल बिटवीन द टू। एक थर्ड जजमेंट है जो अभी रिपोर्ट नहीं हुई है, दे दीजिए, कॉपी दे दीजिए, उसकी कॉपीज आपको दे दी। A recent judgment authored by your lordship, civil petition number 3532 of 2023. जावेद हाशमी तो फुल मेंबर है। आप दे रहे हैं कॉपी? जी इसके कॉपीज नए वाले जो कह रहे हैं वो सबके जो कह रहे थे ना ये बार-बार। अच्छा, ये राइट टू इंफॉर्मेशन वाली जजमेंट इसी पॉइंट नहीं, ये जजमेंट है जहां रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन फाइल की थी और जनाब ने होल्ड किया है कि इट कैन नॉट राइट टू इंफॉर्मेशन राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन वाला अहमद अली वाला केस। हाँ तो हमने दे दी अब इंफॉर्मेशन, तो इससे आपके केस से क्या ताल्लुक बनता है? नहीं सर, इसमें सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कैन नॉट बी ए पिटिशनर. दिस इज व्हाट हैज बीन, एज आई सी, हेल्ड इन दिस जजमेंट इन पैरा 9 ऑफ द जजमेंट. May I read out this para 9? अगर आप हमें दे देते तो आसान होता है। Another 5 minutes I will provide. पढ़ने जी सर, पढ़ देता हूँ। पढ़ लीजिए। The question of maintainability of the writ petition filed by the registrar of the Supreme Court before the High Court was raised before the learned single judge who held the petition to be maintainable by referring the cases of Registrar Supreme Court of Pakistan versus Hassan Akbar and Registrar Supreme Court of Pakistan versus Qazi Wali Muhammad. The Hassan Akbar case, this Hassan Akbar's case is 1987 Pakistan Criminal Law Journal, and the other Qazi Wali Muhammad wala case is 1997 SCMR 141. The Hassan Akbar case was with regard to complaint against Assistant Advocate General who had appeared before the Supreme Court when he was not enrolled. Was out of the recommendation of the disciplinary committee, therefore it cannot be cited as a precedent entitled to Supreme Court to initiate litigation. In the other case, Qazi Wali Muhammad was terminated from the service of the Supreme Court and filed an appeal before the Federal Service Tribunal, whose order reinstating him was challenged by the registrar before the Supreme Court under Article 212(3) of the Constitution. This court held that Qazi Wali Muhammad was not a civil servant as defined the Civil Servants Act 1973, therefore the tribunal did not have jurisdiction. The registrar had not initiated litigation Qazi Wali Muhammad case. He had not filed the appeal before the tribunal. The particular facts and the very limited scope of these two cases cannot be treated as precedents for registrar to initiate litigation on behalf of the Supreme Court, particularly when the judgment is neither case. सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग इस वक्त जारी है। हामिद खान दलाल दे रहे हैं। एक अहम खबर यह है कि इलेक्शन
can sue, they can also defend. No, you can sue, but you can't defend. ये क्या बात हुई? No, defend before the court, but you cannot be appellant because ये मुझे इसकी logic नहीं समझ आ रही. institution, sir, because it is an institution making decision, judicial or quasi-judicial. It is now for the parties in अगर dispute. कोई भी उन्होंने ऑर्डर पास किया कि अपने अकाउंट्स हैं हाई कोर्ट के रिमत दो, तो वो तो फिर उसका तो लोग मजाक उड़ाने लगेंगे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का कि आपने हाई कोर्ट का फैसला मान लिया, आपने चैलेंज भी नहीं किया. तो मतलब ये नहीं, हम ऐसा सिचुएशन, सॉरी आई कैन नॉट एग्री विद दिस. देखें, आई विल गो द एक्स्ट्रा माइल टू रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज व्हिच इंक्लूड्स पार्लियामेंट, व्हिच इंक्लूड्स the Election Commission of Pakistan. If Parliament enacts unconstitutional laws, we will strike them down. If they do anything unconstitutional, we will set that aside. But otherwise, let everybody operate, empower them to operate within their domain. So, अब ये तो की बात नहीं कि High Court cannot make a mistake. They pass an order again, which is, and they say cut off your hand, you can't go. तो फिर हम ये भी कह सकते हैं आप पिटिशन ही नहीं फाइल कर सकते थे. सर देखिए, आपको किसने राइट दिया पिटिशन? मेरी गुजारिश है कि यहाँ पर जो इस केस में भी सर्विस ट्राइब्यूनल इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, रादर ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 212. देयर डिसीजन वाज बीइंग चैलेंज्ड before the Supreme Court by the Supreme Registrar. It was held, no, we can't do that because we are not there to. चलिए, आपका पॉइंट मैंने सुन तो लिया, मगर I don't agree with it. Let me be so straightforward and say it. But there can be always situations where I can say the exceptions can be made. I'm not saying ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सबऑर्डिनेट कोई बॉडी होती है, हाई कोर्ट खुद चैलेंज कर रहा है अपना जजमेंट. वो आपकी बात सही है कि भाई आपको क्या फिक्र है, आपने तो फैसला कर लिया, अब आप अपना जजमेंट क्यों चैलेंज कर रहे हो? बिल्कुल जी, ठीक है. एग्जैक्टली. अब यहाँ पर एक और एस्पेक्ट है इसी का. जी. बिफोर द 18th amendment, before the 18th amendment, let me tell you something which may be good news or it may be bad news for you. हमें बताया कि इलेक्शन कमीशन has extended the time till 7 PM today for allotment of election symbols. तो जरा सा तेजी करते हैं. उसमें मैं एक गुजारिश करूंगा at the end कि इसको अगर जनाब एक दिन के लिए उनको because the thing is नहीं, आप अपने आर्गुमेंट्स खत्म करें, हम इसको फैसला करें. मैं उसके एंड पर बात करूंगा. मैं इसलिए आखिर में सर इसमें गुजारिश ये थी कि 18th अमेंडमेंट से पहले आर्टिकल 17 में एक शिक थी. आर्टिकल 17 उसमें 4 क्लॉजेस होती थी आर्टिकल 17 के. पढ़ ली 17th prior to 2010, before every political party shall subject to law hold intra-party elections to elect its office bearers and party leaders. ये आप पढ़ना चाह रहे हैं ना? जी वही. अब ये खत्म हो गई है. Every political party shall subject to law hold intra-party election to elect its office bearers and party leaders. Now this was omitted. Yes. Under the 18th amendment. But it was brought back by 207 Elections Act. Yes. अब वो election act के तहत. Why I'm quoting this example? As you lordship were pleased to observe yesterday that it is a constitutional body. I'm submitting that after 2010, it is only exercising functions under a statute, not under the constitution. So it is a statutory body for all intents and purposes. So therefore, while interpreting the Election Act, its role is a statutory role, not entirely a constitutional role, because constitution does not require holding of inter-party elections after 2010. Now this is all under the Election Act or previously under the Political Parties Order of 2002. So therefore my submission would be that ECP, for the purpose of the
intra-party election is now a statutory body performing statutory functions, and therefore these two judgments which pertain to statutory bodies, whether as ombudsman or whether as a competition commission, they are at par with that of Election Commission of Pakistan, exercising this function of regulating the پشاور ہائی کورٹ کا جو ججمنٹ ہے حامد صاحب اس میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ ای سی پی کے پاس کوئی رائٹ ہی نہیں ہے انٹرا پارٹی الیکشن کے بارے میں بات کرنے کا دیکھنے کا، وہ ایک ان کے سیکشنز میں ہے، تو اگر وہ اس کو چیلنج نہیں کرتے تو ان کے خلاف وہ ججمنٹ ہوتا تو وہ لا ہی انفیکٹو ہو جاتا نا بات کے لیے. دیکھیے وہ ایک اور ایسپیکٹ ہے بالکل اینڈ ویری ایبلی آرگیوڈ بائی مسٹر علی ظفر کہ it has no jurisdiction, but the question is whether ECP as a constitutional body is any different to other statutory bodies in this regard, in this respect, only in this respect, where it is only exercising statutory function and statutory law. So therefore my submission is, for all intents and purposes, the election ECP performing functions under the Election Act is a statutory body, and has same law applies to it as that of Competition Commission or Ombudsman. Now the next submission is, we see Article 219 of the Constitution. Article 219 provides for various functions to be performed by the Election Commission of Pakistan. If you Lordship kindly consider Article 219. So. So may I read Article 219. The Commission. हमने कई दफा पढ़ लिया. हाँ, point बताएं. This is the next point is that Article 219 provides for various functions to be performed by Election Commission. वो E पे rely कर रहे हैं. जी सर. अब इसमें यही मैंने कहना था कि ये जो पहले 3-4 क्लॉजेस हैं उसमें डायरेक्टली उसको फंक्शन ये हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के. ई में कहा गया है such other functions as may be specified by an act of Majlis Shura Parliament, meaning thereby the functions the ECP performs and with regard to matters of regulation of political parties, they do not fall within the first 4 clauses, fall within after an act of parliament as a statutory body, it is performing that function. So under Article 219 any अगर आप 220 भी पढ़ लें, हम ECP की कदर नहीं कर रहे हैं. प्रोवाइडो नहीं 220 पढ़िए, आर्टिकल 220. It shall be the duty of all executive authorities in the Federation and the provinces to assist the Commissioner and the Election Commission in the discharge of his or their functions. ये पावर सिर्फ एक और इदारे को है, वो सुप्रीम कोर्ट है. आप उधर आ जाइए आर्टिकल 190 में. All executive and judicial throughout Pakistan shall act in aid of the Supreme Court. तो सुप्रीम इनको इतना ज्यादा इख्तियार दे दिया कि all executive authorities in the federation and the provinces. ठीक है, तो you can't, I mean, IG पुलिस नहीं कह सकता है कि मैं भी तो स्टैट्यूट के जरिए हूँ, आप भी स्टैट्यूट के जरिए हैं, सॉरी मैं आपकी बात नहीं सुनता. उसको सुनना लाजमी है. सर इसका लिमिटेड आर्गुमेंट का एक लिमिटेड फोकस है. मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ whether the powers being exercised by Election Commission with regard to regulation of political parties, is that under E or A to D? My submission is under A, Act of Parliament. Correct. Under E. There's no debate on this. Ji. As well.
220 is not with regard to functions, is regard to... But I'm just showing you the importance of this body. Of course, it's not with regard to it, but it has got, even the High Court can't say this, what 220 says. But only the Supreme Court can do some of it. But they are differently worded. Let me read 190 and 220. पढ़ लिया हमने, हम आपको बता रहे थे कि 220 में देखें, it shall be the duty. All executive and judicial authorities throughout. हमारे पास it shall be the duty के लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुए हैं. Yeah. चलिए कंपेयर ना करें, मगर हम ये कह रहे हैं कि इनके पास बहुत इख्तियार हैं. बेशक, क्योंकि फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुई तब सकती है. इसमें कहीं फ्री एंड फेयर की जिक्र नहीं है, एक स्टैंड अलोन प्रोविजन है, इनके इख्तियारात की बात हो रही है इधर. Yes, it can be. Yes, I'm not disputing that. 220 is an important article of the Constitution. मगर ये आपके आर्गुमेंट को तो chisel away your argument. नहीं, अब बात सिर्फ ये है कि उसकी हैसियत एक सिचुएशन में क्या है और दूसरी सिचुएशन में क्या है. कुछ तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की सिचुएशन में है A to D, but E में it transforms itself into a statutory body by acting under statute. Still, it must have all the powers. I'm not disputing that, because without having all those powers, it may not be able to carry out its functions. High Court passes a writ, do not exercise powers. वो कहेंगे हम बैठ जाएं घर में बैठे, कोई चैलेंज भी नहीं कर सकते ऑर्डर को. ये तो doesn't stand to logic at all. Why? नहीं, चलिए आप दूसरा. الله أكبر الله